some of the assignments that I have got in the last class. Okay, let me take the first one. First, I'm sharing the screen. I hope you can see my screen now. Is my screen visible to you? No, sir. Not yet, no? Okay. Is it now? I think you can see my screen. No, sir. Yes, sir. Yes, sir? Okay, the topic is generation of computers. Wait, it's really slow. Generation of computers. Let's see this one first. Okay, this one is from Parag Jyotish Sinwal. Are you there? Yes, sir. Okay, so let's see the introduction part. So, according to Parag, a computer is programmable electronic device that takes data and performs arithmetic and logical operations and gives the output. A computer is an advanced electronic device that takes raw data as an input. और ये जो raw data क्या है हमने last I think first class में ही discuss कर लिया था क्या है as an input from the user and processes it under the control of a set of instructions. कोई जल्दी से बता सकते हैं क्या this set of instructions there is a term to represent that. What is that? Set of instructions को हम क्या बोलते हैं कोई बता सकते हैं? कंप्यूटिंग साइंस में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक टर्म यूज करते हैं जो आप लोग फ्रिक्वेंटली यूज भी करते हो. क्या है वो टर्म? दैट इज प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम मतलब क्या है? आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, प्रोड्यूसेस a result and saves it for future use. In today's day, computers are an essential part of our everyday existence. This means computers are present almost everywhere, making our day-to-day tasks easier and faster. Right? Whatever is given to the computer as input is known as data, while the output received after processing is called information. Very good. This clearly identifies the difference between the data and information. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. सो the term computer was first introduced in 1640. ठीक है, इसका मतलब था one who calculates. It was derived from the Latin word computere, which meant to calculate. Okay, X is, please notice that maintain the means alignment. Okay, in 1897, it was known as calculating machine. Later in 1945, the term computer was introduced as a programmable digital electronic computer, which is known as computer. Very good. तो फिर हमें ये चीज समझ में आया जो ये टर्म है पार्टिकुलर कंप्यूटर ये 1945 में इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, लेटर पोर्शन ऑफ द later part of the 1945. Now, when the computers were introduced, they were very large and could fill an entire room. Some computers were operated using large-size vacuum tubes. अब जो आने वाला पोर्शन है, these are important from competitive examination point of view. एक ना एक क्वेश्चन देते हैं आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं आपका?
बोल देंगे कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करते थे, ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज करते थे, थर्ड कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस, हम देखेंगे, ये आप पहले इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इन 1833 Charles Babbage, known as the father of computer, invented an early calculator which was named as difference engine. Later in 1837, he introduced the first mechanical general purpose computer, named Analytical Engine. The Analytical Engine was to be a general purpose, fully program control and automatic mechanical digital computer. ठीक है, तो now जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आर यू रेडी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so analytical engine, who proposed this? Who introduced this? Sorry. इस आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, दिस इज एनालिटिकल इंजन, ठीक है, दिस इज फ्रॉम द अर्ली 19th century. Okay, so this was introduced by whom? Okay, the answer is चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने ये आपका एनालिटिकल इंजन जो है वो पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था, दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज is also known as father of computer. The next question I want to ask you, who is known as father of computer? Complete, जल्दी जवाब दो, who is known as father of computer? Sir, ठीक है, Charles so Babbage. Sir, Charles right, Babbage. right, क्यों क्यों उनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोलते हैं? बिकॉज ही हैज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द जनरल पर्पस कंप्यूटर, उसका नाम क्या था आपका? एनालिटिकल इंजन, ये है फिगर में, ठीक है, ये नोट डाउन करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ we will discuss about 5th generation of computers. Okay, I'm checking this one also, I'm discussing these facts also. Okay, so please you will note down the questions that I will ask. Okay, so how many generations we have? 5 generations, and they advance into technology that lead to the development of many devices which everybody uses today. The computer journey started in 1940 with the vacuum tubes, goes to the artificial intelligence system which we use today. तो सबसे पहला फैक्टर आपको दिमाग में रखना है, जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, और आजकल आप सभी को पता है हम क्या यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So based on that, we have classified the computers into 5 generations. You all know what is generation. जनरेशन तो सभी जन जानते हो, जैसे आप लोग एक जनरेशन से बिलोंग करते हो, मैं और एक जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जैसे आपके पापा लोग कोई और एक जनरेशन से बिलोंग करते हैं, राइट, दैट वी हैव 5 जनरेशन फॉर कंप्यूटर. तो फर्स्ट जनरेशन क्या है हम देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स. पूरा नोट डाउन करना कॉपी में कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स. और ये एरा कौन सा था? 1940 से 1956, ठीक है. द पीरियड 1940 to 1956 was roughly considered as the first generation of computer. So next question, what is the period for first generation of computer? जल्दी जवाब दो. Sir, 1940 to 1956. Very good. And what we use in the first generation of computer? Sir, vacuum tubes. Very good. In that way, you have to remember these facts. Okay, the first generation of computer should develop by using vacuum tubes or these harmonic valve machines. The input of the system was based on punch card and paper tape. Our output was displayed on printer. अब एक चीज याद रखना. Next question is that for input for input in case of first generation computer, what we use?
we use punch cards and पेपर टेप. ठीक है, इनपुट के लिए हम क्या यूज करते थे, पंच कार्ड और पेपर टेप, और आउटपुट कहाँ दिखाते थे, प्रिंट आउट लेके. ठीक है, तो the first generation of computer work on binary coded, that is 0 1 फॉर्म में. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ये पढ़ा इसने बहुत अच्छे से, कुछ डायग्राम्स और बहुत अच्छे से ये बनाया है. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और वैक्यूम ट्यूब ये है. नाउ let us see the advantages of first generation of computer. The computer was very fast to calculate. The vacuum tube technology made the arrival of electronic computers possible. इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था. देखो हम जो यूज कर रहे हैं अभी 0 and 1 बाइनरी कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये पहली बार हुआ ये चीज. तो ये क्या किया, because of this first generation computer and the vacuum tube technology, the arrival of electronic computer made possible was made possible. ठीक है, those days this was the only electronic. इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज था ही नहीं. तो यही था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक हुआ करता था. नाउ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन आना चाहिए था, इसने सेकंड लिखा है, कोई बात नहीं, हम इसको सेकंड के बदले फर्स्ट करके पढ़ लेते, कोई बात नहीं. ठीक है, बाकी बहुत अच्छा बनाया है. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज नॉट पोर्टेबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब क्या समझते हो आप लोग? What is Sir, portable? which we can carry easily or which doesn't takes a lot of space. Right, very good. Which is movable. Okay, easily movable. We can easily port it. Okay, so but in the case of you first generation of computer, you will see that is a big device, right? So size is big, so you cannot easily move it or means keep it with you, right? So this is not portable. This was not portable, and this was not also a reliable device. An air conditioner is was means mandatorily required in order to cool down. ये बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे, तो इसको कूल डाउन करने के लिए हम इसको एक एयर कंडीशनर के रूम पे ही रख सकते हैं. मतलब रूम ऐसा होना चाहिए जिसमें एक एयर कंडीशनर हो. ठीक है, ये उस समय पे तो कम से कम ये आ गया था. दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. मैं एक बार पीछे रिवाइज करता हूँ. 1940 to 1956 फर्स्ट जनरेशन आया था. मेन टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स, और इनपुट के लिए हमने यूज किया था पांच कार्ट और पेपर टेप, और आउटपुट हम प्रिंट आउट लेके डिस्प्ले करते थे. और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जिसमें बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट हम यूज करते थे. बाइनरी मतलब सभी जन जानते हो, 0 और 1. ठीक है, अब नेक्स्ट आप एग्जाम्पल अगर पूछेंगे तो याद रखना, एनियाक, एडवाक, यूनिवाक, IBM 701, IBM 650, these are some first generation computers. अब एक Sir, क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दैट दिस टू और दिस थ्री, यूनियक, एडवर्क एंड यूनिवेक, ये तीनों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि क्या है ये. What are the specialties or what are the means characteristics of these devices? Please note down the question. ENIAC, EDVAC and UNIVAC. ये दोनों ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन तीनों के बारे में आप सभी जन मुझे बताओगे what are they, what are their specialties. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो हमने यूज किया था वो है ट्रांजिस्टर. फर्स्ट में आपने देख लिया वैक्यूम ट्यूब. अब नाउ वी आर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स फॉर दैट कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है, सो पीरियड क्या है, 1956 to 1963. ठीक है, पीरियड क्या है आपका 1956 to 1963, और इसके लिए हम ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी यूज किए. ठीक है, इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट जनरेशन इसका साइज स्मॉलर था. In comparison to the computers of first generation, the computing taken by the computers of the second generation was lesser. ठीक है, तो ये है second generation. The important thing that you need to remember is that we use transistor technology here. Now, what are the advantages that you got? That it is faster than first generation computers and size is comparatively smaller.
ठीक है, गुड। तो यहाँ दिया भी है, इसने एडवांटेजेस हैं क्या, मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन, good speed and calculate the data in microseconds. Now, can you tell me that um, 1 second is equal to how many microseconds? Yes, 1 second is equal to how many microseconds? Okay, note it down. I'll discuss later. So smaller in the size as compared to the first generation, use less amount of energy. They were more portable and accuracy was improved. But again, disadvantage क्या है? Content maintenance was required to work properly. Commercial production was very difficult. Still, punch cards were used for input. Input के लिए punch card use करते हैं, ठीक है? सभी लोगों ने देखा नहीं होगा इसे शायद। ये दिख रहा है आपको? कुछ फिगर्स, इज इट Yes, विजिबल और sir. नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, को मैच करा के, जैसे आपको पता है 0 1 फॉर्म में आपको इनपुट देना है, राइट? तो इससे आप पहले दिया करना, मतलब दिया करते थे, ठीक है? यू नीड टू गिव द इनपुट विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी। तो अभी तो आप लोगों को जो मिल रहा है मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है? उस समय ये बहुत ज़्यादा टफ हुआ करता था। देन द कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड more expensive and non-viral because हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज किया है, so it becomes more expensive, okay, and कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इसको यूज किया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा जो एग्जाम्पल्स में है कि IBM 1620709 याद रखो, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये यूनिवेक 1108। मुझे हर एक का आंसर, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एग्जाम में ये आपको मिल ही जाएगा। देन कमिंग टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एंड देयर वी यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है? रुको, इंटीग्रेटेड, हाँ दिया है, okay, integrated circuit is shortly known as IC, and the period for this third generation of computer was 1964 to 1971. So IC टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है इंटीग्रेटेड। कोई बता सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहा जाता है? व्हाई वी कॉल इट एज ए इंटीग्रेटेड सर्किट? देखो, ये दिखाई दे रहा है, मैं एक फिगर खोल लेता हूँ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे चिप्स हैं, ठीक है, अलग अलग, एक तो चिप है, उसके बाद इसके आसपास जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सबको हमने एक ही मदरबोर्ड में क्या करके रखा है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है आप अलग अलग चीज को इकट्ठा एक ही बोर्ड में रखना, ठीक है? तो मैं जितना हो सके सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ बिकॉज यू बिलोंग टू फर्स्ट सेमेस्टर, so that's why I tried to talk from the basics, okay? ये डिफरेंट जो चीज है, ये इकट्ठा आपको एक ही बोर्ड में रखा गया है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट? सो ये चीज आ गया कब, 1964 से 1971 के रिलेशन में, मतलब आप हमें अलग अलग चीज अलग अलग जगह से रेफर नहीं करना पड़ा, एक ही बोर्ड में सारे चीज आने लगा। So in comparison to the computers of the second generation, the size becomes more smaller, क्योंकि आपने देखा कि एक ही चीज में सारे चीज जो भी टास्क हैं एक ही बोर्ड में रखा हमने, तो इसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक है? और साथ में इसको ज़्यादा पावर नहीं लगने लगा क्योंकि इसका साइज भी कम हो गया, ठीक है, और पावर भी लेस पावर ऑफ कोर्स, और इसका हीट जनरेशन भी कम हो गया। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इन द थर्ड जनरेशन ऑल्सो, कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज इजियर फॉर कमर्शियल यूज। इस टाइप का कुछ कंप्यूटर आने लगे थर्ड जनरेशन में, ठीक है? कुछ पुराना सिस्टम देखोगे ना कभी, अब ये अभी तो शायद ही देखने को मिले, बट ठीक है, ऐसा बॉक्स टाइप का बड़ा, थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा ही था साइज आज के कंपेरिजन में, तो ठीक है, ये थर्ड जनरेशन है।
हालांकि आपको बस इतना याद रखना है with respect to exam that we use integrated circuit for the third generation computers, and the period was 1964 to 1971. Now, advantage, more portable, less energy is consumed, maintenance cost less. Disadvantage, it is now sophisticated. Means now you have to design these integrated circuits where different means components are there, used for different purposes, being integrated on the same board, right? So this becomes more sophisticated. So for manufacturing IC chips, it is not an easy task. ओके, कूलिंग सिस्टम आप इसके अंदर ही हुआ करता था, आपका मतलब एक फैन लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड। नाउ एग्जांपल, यहाँ जो है IBM 360 सीरीज जो है, सारे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आते हैं। देन C70 168, देन ये वाला याद रखना, हनीवेल 6000 एंड PDP, दैट इज पर्सनल डाटा प्रोसेसर। जितना भी एग्जांपल्स इसने यहाँ मेंशन किया है, they need to be remembered actually. Sometimes questions ask from them also. तो थर्ड जनरेशन में हमने देखा we have used integrated circuits. Now we come to the fourth generation. Now, what we use in fourth generation is our microprocessor. Micro मतलब now processor becomes size is very small now. Micro याद रखना 10 to the power minus 6, अभी मैंने पूछा था आप लोगों को क्वेश्चन, 10 to the power minus 6, ठीक है। तो period 1972 to 2010 was roughly considered as this fourth generation computer, ठीक है, जो हम लोगों ने भी यूज किया, आप लोगों ने भी देखा होगा स्कूलिंग लाइफ में, ठीक है, और अभी भी है ऑफ कोर्स। The fourth generation computers were developed using microprocessor technology. Okay, by coming to the microprocessor technology, इसका इसमें जाएगा, दिया है, ठीक है, very good. So by coming to the fourth generation, computers become very small in size and became portable. Of course, आपने एक चीज देखा होगा, जैसे ही टाइम ये हो रहा है, ठीक है, आपका जो मेमोरी साइज इंक्रीज हो रहा है उसका, बट साइज एज ए होल जो साइज है डिवाइस का वो छोटा होते जा रहे हैं, राइट। अभी SD कार्ड 1 TB वगैरह में आने लगे। पहले SD कार्ड मैक्सिमम क्या होता था, 1 GB, ठीक है, 2 GB, 10 GB, like that. But now 1 TB micro SD cards is also coming. The fourth generation machine started generating very low amounts of heat, and it is much faster, and accuracy is also very reliable. And the production cost reduced to very low in comparison to previous generation. Now, can anybody from you tell me one country where this microprocessor is being manufactured in a bulk? एक काउंट्री के बारे में बताओ जहाँ पे ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। ऑफ कोर्स इंडिया तो नहीं है, राइट? व्हिच कंट्री इज दैट? Sir, is it USA? और कुछ हो सकता है। जापान का नाम आप लोगों ने सुना है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो यू गॉट इट, गुड, ठीक है। तो मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग रिसर्च कर लेना। तो ये अभी का कंप्यूटर है जो हम यूज कर रहे हैं, राइट। माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, इसमें एयर कंडीशनर नहीं होने से भी ठीक है, चलेगा। Typically used for general purposes, small and compact in size, heat generated is negligible, faster than the before generations. And disadvantage ये है कि जो ये ICs हैं, ठीक है, IC को मेंटेन करने के लिए you need some advanced technology, ठीक है। हाई क्वालिटी एंड रिलायबल सिस्टम्स टेक्नोलॉजी कैन ओनली मेक द आईसीस, इसलिए कोई कोई कंट्री इसको बना पाते हैं। पहले तो सिर्फ जापान ही इसके लिए बहुत माना जाता था, अभी हालांकि बाकी कंट्रीज भी बनाने लगे हैं। The latest technology was required for the manufacturing the microprocessor. अब इसमें तो सब कुछ आ जाएगा फोर्थ जनरेशन में, स्टार 1000 या जो आप यूज कर रहे हो वो, ठीक है, PDP 11, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ फोर्थ जनरेशन में हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया, और जो फिफ्थ जनरेशन जो अभी से स्टार्ट हुआ है और आगे भी जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे वो इस जनरेशन में बिलोंग करेंगे। वो क्या है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड ड्यूरेशन इज 2010 to current time. And what we use here? Artificial intelligence.
Okay, you don't need to worry about artificial intelligence. You do have a subject, okay, in some literature, which I'm going to teach you if I will be here. Okay, तो एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगा, या तो कोई अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो यू विल आई सेंड यू अ लिंक. Okay, so Okay, sir. the period, yes, the period 2010 to till date and beyond roughly considered as the period of fifth generation of computer. सबसे एडवांस है क्योंकि एक चीज है ये कंप्यूटर्स में कि now it can decide by itself, it can easily learn, and it can work, I mean, or act accordingly with respect to some future conditions or input. Okay, आपको बार बार उसको ये करने की कोई जरूरत नहीं. एक बार आपने उसको लर्न करा के रख दिया तो वो नेक्स्ट टाइम खुद ही उस चीज को कंडीशंस को क्या करेंगे, इनपुट को पहले एनालाइज करके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे अपने आप, और आपको आउटपुट मिल जाएगा. So human intervention will not be required again and again. Okay. So by the time computer generation was being categorized on the basis of hardware technology, but the fifth generation computer is also including software. Because artificial intelligence term, you know, here we have machine learning technique, computer vision techniques, deep learning techniques. So these actually part of softwares, or more, I mean, specifically, I can say these are some parts of mathematics and statistics, physical equations that being used in some algorithms. Okay, because of that, that can be means trained, and accordingly they can be used for some specific purposes like prediction, regressions. Okay, you don't need to matter. I mean, go into details about them. You will get it in some letters. So ये जो चीज है, दिस आर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. नाउ आपने देखा फोर्थ जनरेशन तक हमने क्या यूज किया, सिर्फ हार्डवेयर के बेसिस पे कंप्यूटर को क्लासिफाई किया, और फिफ्थ जनरेशन में हमने सॉफ्टवेयर को भी इंक्लूड किया है. So one question comes to maybe may come that in which generation of computer, along with hardware, we also consider software for the classification tasks. That is fifth generation. Okay. So of course, these machines have its own means analytical ability. So it's a very high capability, and its memory capacity will be very, very high. Working with computers of this generation is fast. Multiple tasks can be performed simultaneously. एक साथ कोई एक काम कर सकते हो आप, बहुत सारे काम इकट्ठा आप कर सकते हो, right? That is also known as multiple tasking. ठीक है, but वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, ये तो ऑलरेडी है, but multiple tasking with the help of AI based machine is really very fast and accurate. So some of the popular advanced technologies of the fifth generation computer generation include AI, ये तो आपने देख लिया. उसके साथ साथ और एक पेपर है क्वांटम कंप्यूटेशन, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्टिव है आपके सीनियर्स का, क्वांटम कंप्यूटेशन. ठीक है. देन वी हैव नैनो टेक्नोलॉजी. Nanotechnologies, you all know nano, that is 10 to the power minus 9. Parallel processing. Okay. So these are part of this fifth generations. Advantage, you don't need to again discuss because advantages are very clear now. They are very reliable and faster. Portable, size is very, means you can have a very big size memory here. Okay. AI is used, so analytical capability is increased. Parallel processing can be performed more accurately here and more faster, very fast, portable, and easy to handle. Disadvantage is that they tend to be very much sophisticated and complex. Now, you know, you can use AI, but block an AI-based program is not an easy task. Okay, so it is kind of sophisticated and complex tool. They can give more power to companies to watch what the users is doing and allow them to impact their computer. This is again a case of means security point of view, cyber security. You know these things. So that measure you also have to implement if you want your system to be secure. Recently, one attack been means you know in US or in many different countries, one cyber attack they need to face. They have already been facing actually. Can you tell me what is that? What is that actually?
एक जो अभी रिसेंटली साइबर अटैक हुआ है, बहुत सारे मतलब ये आपका मेनली यूएस में और बाकी बहुत सारे कंट्रीज में, ठीक है, ये अटैक हुआ है। उसका नाम क्या है, सुना होगा आप लोगों ने? अगर नहीं सुना है तो ये नोट डाउन करो, थोड़ा पढ़ना इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर वाइन। ओके, सो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ये आपका कुछ भी हो सकता है, एलएपी हो सकता है, नोटबुक हो सकता है, आपका आपका जो मोबाइल है वो हो सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रा बुक, क्रोमबुक, तो डिफरेंट डिवाइसेस में भी पॉसिबल। साइज में यहाँ कोई ये नहीं, इसका जो प्रोसेसिंग पावर है वेरी फास्ट। सो यू हैव सीन quickly recapping all the things. I'm recapping all the things quickly. Now, first generation, the compute, 1942-56, input was taken on the basis of punch card and paper tape. Output is displayed on by printout. Then these are the examples: Univac, Advac, Univac, IBM 701 and 653. Then second generation, we are using transistors. Duration is 1956 to 63. These are the examples: Univac 1108. Then third generation, we are using IC 1964 to 1971. Okay. Then examples, one famous one is Honeywell IBM T60, T70 series. And then fourth generation, microprocessor, 1971 to 2010, right? And now coming to the last one, that is fifth generation, where we are using AI. And the duration period is from 2010 onwards. Now, last question that I want to ask to all of you. So you will answer for comment. And that question is, what was the period of third generation computers? Okay, so this is the fourth question that I have asked. So I think this topic is clear, and this is that assignment that I have considered from Paragjuti. Very good. Although I have gone through almost all of your assignments, I have found this time everything okay. So that's why I'm not, I don't have any one assignment that I can point out that this is the mistake you are doing. Almost all of you are correct. Okay, very good. So that's all for today. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye bye.